बाद? नहीं पता। हो सकता है कि सिर्फ आप LFT के लिए NPL ले सकते हैं। हम LFT कर रहे हैं, ये हमारे NPL के स्कोप में आ रहा है। देयर इज अ टर्म एज अ स्कोप, पता है आपको स्कोप? इसमें क्या है? स्कोप रहता है कि आपने कौन-कौन से पैरामीटर को आपने NPL में लिया हुआ है। बहुत सारे जो लैब चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि ओनली रूटीन पैरामीटर NPL के स्कोप में लेते हैं। LFT, KFT, लिपिड हो गया, शुगर हो गया आपको। अगर आपको और अगर रेफरल लैब है, अगर आपके स्पेशल टेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, देन यू कैन टेक एजुएलसी ले सकते हैं। पुट द नेट सैंपल ऑनलाइन फॉर्म। आपके 10 डेज बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया का डाटा कोरिलेट होकर वेयर योर लैब इज लैंडिंग, इट शोज यू। तो ये डिजिटलाइजेशन का ये रोल है। अगर आपको सिर्फ पेपर वर्क आता है, यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनरोलिंग इन दिस ITPAS program, right? What is digitalization in laboratory? The first example of digitalization is moving from paper-based analog data recording to digital records. Paper records were vulnerable to damage and integrity of data challengeable. Digital record prevented this. Laboratory digitalization cannot be concisely defined but can be loosely explained as the adoption of digital infrastructure that aims to work more efficiently, collaboratively and transparently. Using paper record is the initial step required to ensure it is cost and time effective. Digitalization can induce the sir, he is colleague to Raj Kishore ji. So, basic, what is the need for this? This is a first industrial gas lecture. Many times we call the different pupils from different institutes, either universities. They are coming and delivering the lecture on, suppose on some microbiology, some another biology. But this time, because our students are in the 5th semester, you are the 5th and the 3rd semester. So this time our focus is how to twist you towards the industry. आपको इंडस्ट्री के बारे में बताना है और उसको बताने के लिए जो सबसे बेस्ट पर्सन हो सकता है, दैट विल बी ए इंडस्ट्री पर्सन. Digitalization, you know about the digitalization, that is another aspect, but the main aim for this workshop, either for this lecture, is to motivate our students towards the industrial aspect. What industry needs from our students basically. Understand? To motivate you, either to move you towards in that direction, that this industrial guest lecture is very important for us.